Class years, kindly just let me know if others are joining back. Otherwise, I'll continue. Just please let others know that I have joined back, and if they are interested, they can join. Okay, so let us continue. So what I was saying, that suppose you write 3 plus 5, and then what you will do, you see here that here this run tab, you can either type this run tab and it will give me this answer 3 plus 5 is equal to 8, or you can do one more thing. You write just 3 plus 5 and then hit control enter. What we have just done, I have just given it input to my computer that please add 3 to 5, and then I ran this particular code. This is basically I have written a code on the terminal that is on my Jupyter notebook, and the Jupyter notebook has given me the answer 8 as an output. Here it is written input 3 plus 5 and 8 is written as output. Those of you who are using the Google Colab, exactly same thing. Write 3 plus 5. Sorry. Write 3 plus 5 here, and you can click here on this tab as done, or you can also press control plus enter. Okay, what it will do, it will give you the same result. It will take time according to your internet connection and so many things, your systems and all those things, but look, it has given me an output 8. So the Jupyter notebook and this Colab, more or less they kind of work in similar fashion. Okay, so let us see. So the screen is black. Whose screen? My screen is black. Abhi is saying that my screen is black. Is it? Quick yes, no. Everybody, you can see my screen. Agman says no. Abhi. Subhash, now my screen is visible. Okay, it's visible. It's visible. Okay, okay, it's visible. Abhi, just do one thing. Try to kind of check your system और एक बार एग्जिट करके फिर आप एंटर करके कोशिश करो होने की. ठीक है? Okay, so I'm using Jupyter notebook. You can use Colab. More or less same. There are some differences. अभी उन्हें रहने देते हैं. तो अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसे एज ए कैलकुलेटर की तरह भी यूज करते हैं. ये 6 9 प्लस कुछ भी कर दो, आप एंटर कर दो इसे, ये आपको ये 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको इसका आंसर ये इसको दे देगा. अब बेसिकली मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं इस पे कुछ यहाँ पे लिखता हूं, तो दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज यूजेस माय रैम दैट आई टोल्ड यू टू एग्जीक्यूट दिस पीस ऑफ कोड दैट आई हैव रिटन. ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. सपोज आई वांट टू यूज दिस 8 figure. So what I will do, I will either write 8 and have to run it. Now that 8 is basically it is installed on my RAM. Again and again I'll have to write 8, or again suppose I want to use this 3 plus 5 thing, then again and again I'll have to write it. So one such way of not doing this, not repeating myself, is to store this particular input of 3 plus 5 on a variable. And this is a very our first topic, that is creating a variable. This is the very first topic that we are going to learn today, creating a variable. अब variable क्या होता है इसको देखते हैं. Variable क्या होता है? Variable is nothing basically है, कुछ तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी रखा है. लेट अस, आपको याद है बड़ी फेमस इक्वेशन थी जब हमने अलजेब्रा सीखी थी, है ना, y is equal to mx plus b. तो इसमें हमें पढ़ाया गया था कि जो m और b है they will be constant, but these x and y they are the variables. क्यों variables क्यों है? Because the value of x and y will change, और we can say अगर y dependent variable था तो its value will change depending on the value of x. यानी variable is something which basically changes its value. पाइथन में वेरिएबल का इसी तरह का कॉन्सेप्ट है. कंसिडर इट एज एन एम्प्टी बॉक्स और एन एम्प्टी ग्लास. सपोज दिस इज माय एम्प्टी ग्लास. So this empty glass is kind of similar to the variable in Python. Now if I'll fill it with water, so it is a glass filled with water. Let us say I fill it with Coke, so it is a glass filled with Coke. I fill it with Pepsi or some juice or something, so this glass will basically hold all the properties that of its underlying element that is there inside. Similarly is the concept of variable. I can store anything in a variable, and very easy to create variable in Python. Let us say मैं एक variable create करता हूँ a के बाद में is equal to लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 plus 5. और आप लोग प्लीज मेरे साथ इसको टाइप करेंगे. ओके,
Visible is just like a container that you hold values in. Very good, Abhishek. You have a coding background. Okay, variable just like a container that is useful to hold the value in the memory. Okay, so I'll just the thing is this, ये क्लास का जो लेवल है अभिषेक, ये मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ, कुछ बच्चे थे सेक्शन है जिनका कहता हमें कुछ पता ही नहीं इसके बारे में क्या होता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टेक्निकल वर्ड्स कम से कम यूज करूं, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर यूजिंग। अभी मैं मेमोरी के ऊपर आने वाला हूं। तो जो मैं यहाँ पे कह रहा था, सपोज a इज इक्वल टू 3+5, और आप मेरे साथ इस चीज को लिखेंगे a इज इक्वल टू 3+5 और कंट्रोल एंटर करके इसको रन कर दीजिए। और रन करने के बाद इसने हमें कोई आंसर नहीं दिया। देखो हमने जब ऊपर लिखा था 3+5, इन पे आ रहा है 3+5, आउटपुट पे आ रहा है 8, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। यही एग्जैक्टली काम आप लोग जो कर रहे हैं। अच्छा, गूगल कोलैब में मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब सपोज ये एक लाइन में हमने कोड लिख दिया, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन ऐड करने का दूसरा तरीका शिफ्ट एंटर भी है। आप शिफ्ट एंटर करोगे तो दूसरी लाइन आ जाएगी। यहाँ पे भी आप a इज इक्वल टू कर सकते हो, a इज इक्वल टू 3+5, आप इसे एंटर कर दो तो आपका जो है ये, इसने एग्जैक्टली वही काम देखो यहाँ पे किया जो कि अभी यहाँ जुपिटर नोटबुक में उसने काम किया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, मैंने आपसे क्या बताया था, जैसे कि मैंने वर्ड में ए प्रेस किया था तो उसने मुझे ए दिया, बट अभी जब यहाँ पे मैंने ये काम किया, प्लीज फोकस ऑन दिस लाइन नंबर 13, फोकस ऑन दिस लाइन नंबर 13, we have written a is equal to 3+5. What just happened? Let me explain it to you in this way. We have our memory, जो जैसे अभिषेक ने कहा, we have our RAM memory, that is this temporary memory which is known as the RAM. In this RAM, what happened is that as soon as we press hit enter or we run this line of code, line 13, 3+5 is equal to a, it has calculated the answer as 8 and created a reference to 8 as a. And this is basically what we have been able to do with using this language Python. That now what will happen, whenever I'll type a and I'll run this line, it is going to give me an answer. Why? Because in the temporary memory of my machine, value 8 is created as a result of 3+5, and a reference has been created, that is a is equal to 8. Okay, of course this is the temporary, it happens in the RAM contains so many things, but for now abhi hum zara memory allocation ki baat kar rahe hain. So this 8 is calculated value of 8 and a reference is calculated as a. So whenever I'll type a, what I'll get 8 as an answer. I mean, look, just I can do 8 plus let us say 3 and it will give me an 11 answer. So I can also do a plus 3, it is going to give me an 11 answer. Why? Because now a doesn't mean that word abcd wala a, doesn't mean a basically means what? 8. And how I am able to do that? I am able to do that writing a line of code by creating a variable, that is a is equal to 3+5. Some of the students are waiting in the okay, admit all, thank you. I have given admit all, very good. Okay, तो ये वाली चीज आपकी समझ में आई, और जैसी कोई चीज अगर आपकी समझ में नहीं है, यू आर गोइंग टू रेज योर हैंड. ओके, यू विल रेज योर हैंड and I'll try to explain it. I can see all of your messages, so not to worry. Okay, all your questions will be answered. Okay, so now I hope the concept of variable is clear. We can create any variable, we can give it any value. Let us say I create another variable. What I just did, you can go here, add a plus tab, and the new line, new Jupyter notebook line will be created, or you can use shift enter. So let us say I created another variable and I put a value of b is equal to 6. Run it. As soon as I run this line number 21, what will happen? In my RAM memory, some memory allocation will happen of value to 6 and a reference will be created, that b. Now what will happen is that whenever I am going to call b, here I am going to call b, it means 6 in my machine. Why? Because my RAM holds, it has allocated the memory 6 and it has allotted this thing to a variable b. So I can do such kind of operation also. Let us say a plus b. Write a plus b. Hit enter. It is going to give me a 14. Why? Because a is equal to 8 and b is equal to 6. Got it?
Good. Now, one very basic topic in Python is also types, or we can say data types. Data types. Okay. Our Python has got different kind of data that we should know. Okay. Okay. Admit all. Okay. So let me give you the example here. For example, number one data type is that we have is the integer, which is denoted as int in Python. For example, that number 1, 2, 3, 4 that we use, and we all know that from our mathematics, this 1, 2, 3, etc. These are known as the integers. For example, let us say there is an inbuilt function. Python has got thousands and thousands of inbuilt functions, and one such function that we are collab पर enter के बाद total नहीं आ रहा है. सादिया 101% आएगा, क्योंकि जो गूगल कोलैब मैंने भी गूगल से डाउनलोड किया, आपने भी उसे गूगल से डाउनलोड किया है. जस्ट रिफ्रेश इट, हिट एंटर, और आप एंटर मत करिए. यू हैव टू रन दैट थिंग. यूज दिस की, यूज दिस की. ओके, सो इट विल रन इट. कंट्रोल प्लस एंटर आपको करना है, ऐसे रन ऐसे करना है. बट द थिंग इज, इफ यू हैव hold this value in a variable, then it will not return you as answer. It will not give you the answer 8. You will just add new tab and type a, then it will give you that a is equal to 8. Okay, very good. चलिए, तो इंटीजर है. अब ये हमें कैसे पता चलता है? लेट मी एडमिट गिव एंट्री टू दिस. जब फॉर एग्जांपल टाइप, एक हमारे पास टाइप फंक्शन है टी वाई पी. ये ग्रीन कलर का हो गया, ये इनबिल्ट फंक्शन है. मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिखता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ 100% ये काम कर रहे हैं. अब सपोज मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को मैं एंटर बोल देता हूँ. बेसिकली बाय एंटर आई मीन यू नीड टू रन दैट लाइन. आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंटर. सो यहाँ पे लिखा हुआ गया int int. why? Because the type a is not a in my Jupyter notebook. A is basically what? A basically means 8, and 8 is this whole kind of number 1, 2, 3. So it is an integer. एक और टाइप हमारे यहाँ होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोट. फ्लोट, ठीक है. और फ्लोट का एग्जांपल है आपका जैसे कि आपके डेसिमल्स में जो नंबर सिस्टम हमने स्कूल में पढ़ते हैं, 1.2 हो गया, 3.5 हो गया, एटसेट्रा. दीज आर नोन एज फ्लोट. चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं सी, और सी की वैल्यू रख देता हूं 2.69 या 2.6 ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने ऐसे हिट एंटर नहीं, मैंने बेसिकली इस लाइन को रन किया. कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, और ये ऊपर आपका रन का बटन है. किसी भी तरह से आप कर सकते हो. अब मैं इनबिल्ट फंक्शन वही यूज करता हूं. टाइप यहाँ पे सी लिख देता हूं. अगेन आई रन दिस लाइन. देखो इसने बताया दैट सी इज बेसिकली व्हाट? फ्लोट. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट आई मेंट. लाइक वेरिएबल इज एन एम्प्टी ग्लास और एन एम्प्टी बॉक्स. इसके अंदर जो भी कुछ होगा उसकी वैल्यू इनहेरिट कर लेगा. मैंने अगर इस ए में एक इंट रखा तो ए को ये मुझे इंट बता रहा है. अब इसी तरह मैं ए को भी चेंज कर सकता हूं. लेट अस से ए इज इक्वल टू 5.6. लगा देते हैं. ए इज इक्वल टू 5.6. मैंने इसे रन कर दिया, और अब मैं टाइप ए चेक करता हूं. टाइप ए, तो इट इज फ्लोट. व्हाट जस्ट हैपेंड? in my temporary memory earlier I have created this reference to reference a to this value 8. This is known as temporary for some reason. Now whenever I, just as I click that a is equal to what? A is equal to my what? 5.6. So what happened is that this 8 is removed, and this 5.6 will be allocated some memory on my machine, and new reference is created with this a. Now a is not 8, it is 5.6. That is why it is temporary memory. Okay. और अब क्योंकि डेसिमल में है आपका, तो इसका मतलब क्या है आपका? ये फ्लोट हो गया आपका. क्लियर है? उसी तरह अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. तो मैंने आपको बता दिया फ्लोट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया इंटीजर क्या होता है. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग, ओके. स्ट्रिंग क्या रहता है? एनीथिंग विच इज रिटन, लेट अस से मैं अपना नाम लिखता हूं. मैं पहले क्या कर रहा हूं, ये आपके जो कोटेशंस होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, या तो सिंगल लोग करें या ऐसे आप डबल करें. ओके, ये आपकी मर्जी है. टाइप करिए इसे, एंटर कीजिए, पास में दे रखा है आपके. लेट अस से आई राइट माय नेम हियर एंड आई स्टोर इट इन ए वेरिएबल बाय द नेम ऑफ जे, एंड आई एम गोइंग टू रन दिस लाइन. ओके, लाइन 37, ये मेरा कोड रन कर दिया गया है. वेरी गुड.
अब जब भी मैं जे कहूंगा तो रिकॉल करूंगा तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है वैल्यू जुनैद। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में मैं जो भी कुछ लिखता हूं इस चीज को हम कहते हैं स्ट्रिंग। मैं चेक करते हैं, देखो टाइप ऑफ जे विल बी नोन एज str। तो ये हमारी थर्ड डेटा टाइप है, थर्ड डेटा टाइप हो गई हमारी string। एग्जाम्पल एनीथिंग विच इज रिटन इन योर कोटेशंस, लेट अस से जुनैद, जुनैद लिखा हुआ है, और आपका कुछ भी लिख दीजिए, आप अपना एमबीए लिख दो। यहां तक कि अगर मैंने इस 4 को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है तो ये 4 इंट नहीं माना जाएगा, ये स्ट्रिंग माना जाएगा। ओके, चेक करके देखते हैं। लेटर से एक वेरिएबल डी में क्रिएट करता हूं और मैं कोटेशंस में लिख देता हूं 4। मैं इसे रन करता हूं और अब मैं टाइप डी चेक करता हूं, टाइप ऑफ डी, it will tell me it is a string not int, it is not int, it is what, it is an string। ओके, तो ये हमारी थर्ड डेटा टाइप हो गई, दैट इज एन स्ट्रिंग। एक फोर्थ डेटा टाइप हमारी और होती है, उसे हम कहते हैं बूलियन वैल्यूज। बूलियन, और ये कुछ नहीं होती, ये होती है बस ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे ट्रू का कैपिटल टी जो है इट विल बी इन कैपिटल ट्रू, तो दिस इज ट्रू मींस ट्रू, फॉल्स मींस फॉल्स, दैट वी ऑल नो। सो वी हैव दिस फोर्थ डेटा टाइप, दैट इज boolean, and the example is true and false। ओके, सो अब मैं इसकी टाइप चेक करके बता देता हूं आपको, टी बाई पी टाइप, ब्रैकेट लगाया, ट्रू, इसे मैं रन करता हूं, look the answer is what, boolean। so the type of true is what, boolean। similarly you can check the type of false, false also, type of false, sorry false हो गया, this is boolean। okay, one interesting thing in Python is that true means 1, false means 0। for example, if you just type true plus true, so it will give you an answer 2। why? Because true in Python is also means 1। okay, let us say you write this true plus true in this next line minus false, so at the back end it is going to calculate 1 plus 1 minus 1 is equal to 2। okay, so this is how it is going, it would be, sorry, this is what I meant, let us say, so this is going to give you this, so it kind of works in ones and zeros also। so far with me, good। chat message देख लें, float is be useful to calculate point value, sir। Abhishek, tell me one thing, you have knowledge of C and Java? Abhishek Yadav wants to say something। Abhishek, I'm asking you a question। okay, someone has said sir thoda fast ho raha hai, please go slow। okay, I'll go slow। okay Abhishek, I'll go slow। okay Abhishek, the thing is this, that you know C and C++, every language has got its own syntax। okay, and so Python is you will find Python very easy, very easy, and I am going to teach you those for loops, if else statement, while loops that you have studied in other languages also। so the underlying concept of like what basically what is the purpose of if and else statement is, it is there in the Python also। okay, but syntax is going to be changed। okay, so that you will have to have some patience, and then we will one by one we will try to see how Python is different from C। basically we are learning Python, our ultimate aim is what, data analytics, or maybe building machine learning algorithms, if you are interested in that kind of stuff, if you want to go that way। otherwise simple data analytics, that is Python, then your statistics, your Power BI, Tableau, SQL, Advanced Excel, if you know that much, then I think you are somewhat ready to be call yourself as a data analyst। okay, so yes, C can do so many things that maybe Python cannot, but industry uses Python or R in case AI or machine learning is concerned। so we will learn in that we will learn all these things with that respect to।
ओके, चलिए। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सो वी नो दैट वी आर काइंड ऑफ, अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, सम टाइम यू आर गोइंग टू राइट ए गुड कोड, 100% correct code in Jupyter notebook, but then it will either give you error, or maybe it won't run. It may sometimes give you wrong answer. So in that case, what you are supposed to do here, you will see kernel, KERNEL. You will go to kernel and then you are going to restart your kernel. Restart. Okay. So this is what you will do, and it will work again. So this we will have to do. This is kind of problem with the Python, but you will not find this problem in Python. There are other code editors. This is Jupyter is just a code editor. There are many other code editors such as PyCharm. Here you see this square box PC. This PC is known as PyCharm. This is industry grade code editor, which we will learn later. So you will not find such things there, and you will not face such kind of things there. But in Jupyter Notebook, you will have to restart your kernel. Chal. So a little bit more about variable assignment. Let us say I want to assign multiple variables, multiple things. Then what I will do, A, B, C, D, okay, is equal to, let us say 5 to TRUE. Yes, spelling अलग हो गई. Okay, or one more thing, let us say 5.6. Hit enter. So now what, in this one line of code, what I have done, I have assigned these many values to these 4 variables. Okay, suppose what I will do, if I type A, 5, if I type B, 2, if I type C, it means 2, that is a boolean. Okay, so all these things we can do with our Jupyter notebook. I'm going to be slow now. Okay, one more thing that we can do, let us say with our string, is that which is something which is known as concatenation. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ string concatenation. What is the meaning of string concatenation? Is concatenation basically means combination. Let us say we have a string J, our previous string, that is J, which is equal to Junaid, and then let me assign value Rizvi to variable R. I am going to run this line. I am going to be very, very slow. Please be with me. Type with me. Create your own variable, assign your own name, and then what you do, let us say I do J plus R, and I'm going to run it. What is the output? Junaid Rizvi. So what it basically did is that it kind of combined these two strings, and that is known as string concatenation. ओके आप एडिशन वर्ड यूज करना चाहते हैं कर लीजिए, बट मैं आपको एग्जैक्टली जो वर्ड आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे, दैट इज द कॉन्कैटिनेशन. आई एम गिविंग यू दैट वर्ड. ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ओके, ठीक. आई कैन सी ऑल योर मैसेजेस. सो अब आज की क्लास में मैं यहीं तक रुकता हूं. इट्स 10:40 ऑलमोस्ट. Okay, the Zoom is saying that our time is up. ठीक, so मैं आज की क्लास में यहीं तक रुकता हूँ. I'll be slow. I'll be very, very slow in my next class. Okay, Abhishek is saying yes sir. So अब आप में अगर किसी की कोई individual problem है, you can raise your hand. I will unmute your mic and I'll allow you to speak. हाँ अभिषेक, 7 to 8 ही करेंगे, बट आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और इस वजह से मैंने कहा, लेकिन बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा एक क्लास तो 100% आज मैं करूंगा ही. ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम से डिले हो रहा था कि इस सैटरडे करेंगे, इस संडे करेंगे. सैटरडे वर्किंग हो गए, उसमें तो हो ही नहीं सकता. तो मैंने कहा आज 100% एक क्लास तो मैं करूंगा. और अगेन व्हाट हैपन इज दैट कि एक क्लास कम से कम रिकॉर्डिंग 100%, ये सारी क्लास रिकॉर्डेड है और ये सब तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेंगी इसकी. द थिंग इज दिस कि एक क्लास कम से कम इंस्टॉलेशन में चली जाती है हमारी, तो वो होनी थी. तो मैंने कहा आज कम से कम सारी इंस्टॉलेशन करा देता हूँ आप.
रिकॉर्डिंग मेल पे नहीं आएगा तो मैं आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, अब हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि मैं सारी रिकॉर्डिंग जो है आपको किसी ना किसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा, तो रोहित परेशान मत हो। ओके, ऑफ कोर्स ड्राइवर पे यही ऑप्शन है हमारे पास, और क्या। ठीक, एक बार दोबारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट बहुत आसान है भाई, यहाँ सर्च पे जाओ, यहाँ लिखो एनाकोंडा, एनाकोंडा, ANA, ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाएगा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे क्लिक कर दो उस पे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ओके, अब ये तुम्हारा ये ओपन, थोड़ी देर बाद ये इसकी लोकेशन दे रहा है, बेस क्या एनवायरमेंट है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या है। अभी बस देखो ये यहाँ पे है मेरे यूजर सी, ये इसकी लोकेशन बता रहा है कहाँ पे। यहाँ पे लिखो जुपिटर स्पेस नोटबुक और बस इसको एंटर कर दो। integer process, what is integer process? Sir, can you sir repeat integer process, how to run? Rajat, what is the meaning of integer process? What you mean by that? This you mean that okay, int, you mean int? I just said that let us say this variable a is equal to 5, though 5 is an integer. Okay, you will check type a, it will give me int. Okay, so it just basically we have this inbuilt function type that we use to find out what is the type of our variable, because I can change the value of a. I can also say that let us say a is equal to MBA. So what is this MBA? It is there in quotation, so MBA is in a string. So now if I'll check type of a, it will give me MBA. So what I'll do, I'll also download this notebook. Let me rename it to GIMT, GIMT Python 1. Okay, let me rename it, and I'm going to email you this file only, so that you can further use it for your benefit. I'll email you the file. I'll email you the file also. Okay, you will have this file only. I'll ask Agman and Rajat, they will give me their email ID. I'll email to both of them and they will email to you. Okay, any more questions? Okay, okay. Save भी करना है means Sadia, this is automatically getting saved, no problem at all. Okay, if I'll close it, I'll open it. You will see that it is there. हाँ, बोलो प्रेरणा, बोलिए. Yes, प्रेरणा. Prerna, you can unmute yourself. Sir, sir, just wanted to ask if you are writing J is equals to Junaid, so J will be in small letters, no? Yes, yes. Use small letters. Use small letters. Okay. I mean, you can also write capital J. Capital J also. J is equal to Junaid. But then you will have to call back capital J only. Okay. If you'll call back small j, let me restart the terminal. Let me restart the terminal. Just 1 second. I'm restarting it for a reason. Just now, if you will, let us say capital J is what? Junaid. But now, if you will run small j, Python will say j is not defined. J is not defined. Okay. Why? Because in Python, capital J Temporary. is different from the small j. So capital J and small j, even though we have studied, okay, they both represent j, but in Python, capital J is different and small j is different. Okay. Yes, sir. Any more question? You can raise your hand and I'll unmute your mics one by one, and you can ask your question. So this is the very beginners level of Python. After a few classes, you will be able to write your own codes. Okay. Okay, Subhansh, phone se dekh ke to try to log in from the system only. Okay. Okay. I'll decrease my speed. Okay, I'll decrease my speed. I'll be slow from the next class. Okay.
If anyone of you wants me to unmute their mic, you can please raise your hand or write in the chat box, and I'll allow you to speak. Okay, then let us meet on the next class. And कल मंडे है और मंडे आप लोगों को प्रेजेंटेशंस बना के लानी है जो मैंने आप लोगों को दी थी. Okay, so we will have presentations tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you for your time. Thank you for coming at this odd timing. Very good, Prerna. You will learn lots and lots of things. Good night to you, Shreya. You will learn lots and lots of things. Okay, so लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते तो भाई किसी दोस्त के लैपटॉप से दे देना सादिया. अब ये तो अब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो. यू विल हैव टू मैनेज सच थिंग्स. ओके, so you will have to give presentation tomorrow and Monday, and it contains marks, so that you will have to figure it out. Okay, Prerna, good night to you. Thank you so much. Most welcome, Ashita. Thank you. Thank you. Most welcome. Most welcome. Good night, Rohan. Okay, so we will meet Monday in offline class, and then maybe next week on the weekend, or maybe in between. Later we will discuss the timing in the next class. We will try to have the second class, and we will learn further. We will begin from writing simple codes. You will all be able to write codes in your next class. Okay. Okay, thank you so much. Thank you for your time, and we will meet. Still somebody's. Good night to you. Sneha has just arrived. Sneha, अब तो क्लास भी हमारी खत्म होने वाली है, हो चुकी है बल्कि. ओके, चलिए. Thank you so much, and let us meet tomorrow. Thank you.